And this can be done only through the help of a team. Must have, as we say, the importance of our vision. It's not going to happen even with the best of infrastructure and the best of curriculum. And I think it's all boiled down to that. Teacher training. And today we had a brilliant platform with principals and chairmen and I think 2 less of students. We have not heard their voices. And today we need to take this risk, go into classrooms, sit with them, ask them, what do you want? How do you see the world? Because the moment you interact with these 10th and 12th class students, they're really inspiring you. And from there we start to construct what education is supposed to be. We cannot do new with old, and they are the new, so we need to do new with them. Thank you. Thank you. Awesome. Together, let's get them straight here, and now let's clap for Srinagar, how beautifully you have put across this conference for all of us. देखिए, इसका जो टाइटल है स्किल डेवलपमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, मगर स्किल डेवलपमेंट हमारे स्टेट के लिए क्या होना चाहिए वो हमको सोचना है। वही एक अहम इशू है इसमें, हमारे स्टेट के लिए स्किल डेवलपमेंट क्या इम्पोर्टेंट है। हमारे सिर्फ शॉल और कालीन ही नहीं, बाकी चीज़ें भी, हमारी डेयरिंग है, हमारी मटन प्रोडक्शन है, चिकन प्रोडक्शन है, ये सारा ऑल नीड स्किल टेक्नोलॉजी एंड दे ऑल्सो नीड नई टेक्नोलॉजी। What will be your message on this day? On this day, my message will be that everybody has to put in their effort. Everybody means parent, teacher, student, owner, for the future of the children. तो बिरला स्कूल का जो ये आज का इनिशिएटिव है, इस हवाले से बताइए कितना अहम है और बिरला स्कूल के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, बिरला स्कूल तो बड़ा अच्छा स्कूल बना है। मैं आज आया हूँ यहाँ पे इसलिए देखने के लिए कि कितनी इन्होंने इम्प्रूवमेंट की है, और उसमें मुझे बड़ी खुशी है कि एक और स्कूल अच्छा बना है यहाँ। जितने अच्छे स्कूल बनेंगे उतना अच्छा है, और ऐसे इनिशिएटिव्स लेने बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। थैंक यू। There are so many challenges that educators, students need. So it's very important human interaction. And our students, our children to develop and work for them with the students. For every person self, it's always benefiting. Then I have 29 days in my school. Realize their potential and then use these technological advancements to so critical for our, and there is a discontinuity. There's a radical jump from the last century to this century, and if we do not embrace and if we do not grapple with these realities, we better get doomed. We are doomed in a very bad way. Technologies, we create technologies in the domain of AI, and some of the realizations which I had, how education should change and how education should integrate these insiders from the frontiers of research. So one of the things is we have to contextualize education for 21st century. देखिए, NEP के तनाजुर में देखें तो अब स्किल ट्रेनिंग और जो भी उसके साथ और जुड़े हुए मामलात हैं अब स्कूलों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक एक सिस्टम था, ट्रेडिशनल वे में हम जा रहे थे, लेकिन अब NEP के साथ साथ हमें भी बच्चों को 21st सेंचुरी स्किल के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट्स होंगी, जो चैलेंज होंगी, उनका मुकाबला करना है, बच्चों को उस लिहाज से तैयार करना है ताकि हमारे स्कूल फ्यूचर रेडी हों और हमारे बच्चे जो हमारा फ्यूचर हैं उनकी तालीम तरबियत हो सके और वो ग्लोबल चैलेंज को फेस कर सकें। इस ताल्लुक से ये जो बिरला ओपन माइंड्स में आज ये प्रोग्राम हुआ, हम इस स्कूल को मुबारकबाद देना चाहेंगे कि यहाँ पे थिंक साइट और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के कोलैबोरेशन से जो प्राइवेट स्कूल्स के लिए यहाँ पे ये प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया, जिसमें डिफरेंट स्कॉलर्स भी एजुकेशन भी शामिल हुए। इसमें जिस चीज़ पे ज़्यादा जोर दिया गया वो कि कोलैबोरेशन की कितनी अहमियत है। देखिए, जब तक हम अपने रिसोर्सेज शेयर ना करें, जब तक हम कोलैबोरेशन से काम ना लें, जब तक हम एक दूसरे की बेस्ट जो उनके काम है, प्रैक्टिस हैं, जब तक उनसे हम ना सीखें, तब तक हम एक वो प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं बना सकते हैं जिससे हमारे बच्चों को फ़ायदा हो। क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा कि NEP
जो स्कीम अब गवर्नमेंट यहाँ लागू कर रही है जम्मू कश्मीर में, बड़ी तेज़ी से उसको लागू किया जा रहा है। उस ताल्लुक से हमारे स्कूलों के लिए ये बहुत ही ज़रूरी बन चुका है। ये दूसरे स्कूल्स के साथ कोलैबोरेशन करें, जो रिसोर्सेज हैं उनको आपस में शेयर करें, ताकि NEP को भी लागू किया जाए। और जो ऑन ग्राउंड दिक्कतें हैं, देखिए NEP मॉडल जो है ये लागू होने के लिए ज़रूरी है कि स्कूल भी उस लेवल पर तैयार हों, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से भी और ह्यूमन कैपिटल के एतबार से भी जो हमारे स्कूल तैयार हों। उस ताल्लुक से आज ये जो प्रोग्राम हुआ आपकी नवेद का, ये पहला प्रोग्राम था जिसमें आपस में कोलैबोरेशन पे बात हुई, नेटवर्किंग पे बात हुई, और इस बात पे जोर दिया गया कि हमें एक दूसरे अपने जो रिसोर्स हैं उनको शेयर करके, ताकि हम बच्चों को बेहतर से बेहतर तालीम दे सकें। शुक्रिया जी, थैंक यू। After that, we got computers and all that. But we have to realize that computers have become an essential ingredient of science of educational process. We are missing a big way. So therefore, I would emphasize. There is a man called Eric. Students, give me your patient hearing. There is a. Can we have a huge round of applause? Very thoughtful. Doing to the part, that is very interesting to know. So when we say beyond skills, beyond classroom, beyond scholastic, no, they were not beyond scholastic. जो हो रहा है वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो पूरा खेल हमारा ये है कि ये स्किल अगर आप बच्चों में लाना चाहते हो, सबसे पहले प्रिंसिपल और टीचर्स में लाना ज़रूरी है, क्योंकि टीचर्स ही जब तक कई चीज़ों से एक्सपोजर नहीं होगा वो आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। और स्किल हमको इस तरह से लाना है कि बच्चों को मज़ा आए। ये एक स्कूल का जो बहुत बड़ा एलिमेंट आज की तारीख में मिसिंग जो है, द चिल्ड्रन नॉट हैविंग फन। तो उनको स्कूल में मज़ा आना चाहिए। हमारा उद्देश्य जो उनको पढ़ाने का है, हमारे लर्निंग आउटकम ऑब्जेक्टिव, वो सारे अचीव होने चाहिए, बट मज़े के थ्रू होने चाहिए। तो इसमें क्या बच्चों को कोई किस्म का स्ट्रेस या प्रेशर नहीं होगा। तो स्किल एजुकेशन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जो हालात हमारे हैं 12वीं के बाद में, ग्रेजुएशन के बाद में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है कि बच्चों को हम सही ढंग की शिक्षा दे नहीं पा रहे ज़िंदगी जीने के लिए। तो स्किल एड्स ऑन टू दैट मिसिंग लिंक ऑफ व्हाट दे रिक्वायर फॉर द लाइफ। सो if they are skill oriented, if our education was skill oriented, it will do much wonders for the children. तो बिरला के बारे में क्या कहिए? हाँ जी, बिरला ओपन के बारे में, the school is very good, the people are very proactive, आगे की सोचते तो ही तो इतना काम कर रहे हैं, वरना नहीं कर पाते। तो उसका स्टाफ भी काफ़ी चार्ज्ड है, और भी कुछ ट्रेनिंग उनकी होगी तो और चार्ज हो जाएगा। थैंक यू। The seed of entrepreneurship inside him since his There, I studied in 12th. Later, I went to VIT Vellore. Okay, so we all know that every student is competing with each other in academics. They are already competing with the at school level and at city level also. But all around the globe, there are millions of students actually. Thank you, Bright Champs, and thank you to Birla Open Minds for giving us this beautiful afternoon to share our thoughts and to discuss and to actually network amongst each other, and with a hope that even Kashmir can see a new future, definitely. It's about how you are fostering it in your children. I will not go with, because I really strongly believe in, as ma'am what she said, let's not talk about ideologies, let's not talk about pedagogies in big terms here. Let's talk about the ground realities. Because when we are on panel discussions, when we are speaking on various platforms, then we have all the goodies with us. We got small notes with us. We pick up few good terms from the internet or from our schooling and anecdotes, and we start. I can quote you many doctors in Kashmir who did not score well in grade 10, but suddenly they pop up and started getting the scores and then becoming great doctors, engineers, teachers. We have exceptional. In the past, I always think, when I look at those teachers, they never had resources. We were conducting class under the shade of chinar tree, on the banks of the river. When I was doing biology, our dissections were on the streams. It's not a rocket science. The only thing, you have stopped learning. You have stopped learning. Have you read this book called Who Moved My Cheese?
بیٹا بہت اچھا کوشچن پوچھا آپ نے. آئی ہیو آلویز بین سپورٹیو اینڈ ایڈوکیٹ آف دا تھنگس دیٹ وین ایور کمز foreign education to this part of the country, I always encourage that and I always appreciate that. I have acknowledged this Birla School and I congratulated this one administration of this school for organizing such a wonderful event for students and then for teachers also. So then again I said that we, the administrators, the educators, the teachers need to be updated of the new and emerging trends in science and technology. Then and only then innovation is possible. We have to say goodbye to the rote learning. We have to encourage hands-on practices. That's it. Thank you. Don't you think there should be a collaboration between industries and academics? There should be a balance. I'm talking in terms of curriculum. Something else, and we expect children to do something else. Where is the integration of the syllabus? And conferences like this should dwell upon integrating those skills into curriculum which make children industry ready. And that is the biggest problem. We are only vomiting knowledge. We are training children to vomit knowledge. We are not training them to actually acquire skills that they become self-actualized. Self-realization is a far-fetched myth. آج کے وقت میں اس طرح کے پروگرامز کرنے کی ضرورت بہت زیادہ ہے کیونکہ شکشا کا، ایجوکیشن کا، تہذیب کا جو سوروپ ہے پچھلے کچھ سالوں میں کافی بدل گیا ہے. اور جیسے پہلے ہم صرف رٹ کے یا بچوں کو کچھ چیزیں یاد کرا کے پڑھا سکتے تھے، ابھی سمے بدل رہا ہے اور جو جاب مارکیٹ ہے وہ بھی بہت ڈائیورسیفائی کر رہا ہے. تو کنونشنل جابز اب اتنے زیادہ ہیں نہیں اور ان کی جو مانگ ہے وہ نشچت روپ سے سپلائی سے زیادہ ہے. تو ہمیں بچوں کو سکلز سکھانے ہیں. اس کارن یہ جو کانفرنس ہے یہ بہت اہم رہی اور اس نے ہمیں شکشا کے نئے آیاموں سے روبرو کرایا. برلا اوپن مائنڈز اسکول میں آ کے نہ کیول اسکول بلکہ جس طرح سے یہ چلایا جا رہا ہے یہ دیکھ کر کافی اچھا لگا. اور ایک وشیش بات، ہم جے پور میں رہتے ہوئے یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ شری نگر میں بھی شکشا کے چھیتر میں کچھ اس طرح کی کرانتی ہو رہی ہے. تو شری نگر واسیوں کو، برلا اوپن مائنڈز اسکول کو، GSLC کو، سب کو ہماری طرف سے بہت بہت بدھائی، بہت بہت شبھ کامنائیں. اب جب دوبارہ آئیں گے تو امید کریں گے اور ترقی یہاں پر ہمیں نمائندہ ہو. دھنیہ واد. ڈاکٹر کنال آنند. پروفیسر جی بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ یہاں پہ تشریف لے کر آئے. دراصل یہ ایک ایسا انیشیٹو تھا جو کشمیر میں پہلی بار ایک نیشنل لیول پہ ہوا ہے اور مین منظر اس کے صرف ایک ہی چیز تھے کہ ہم کس طریقے سے بچوں کے اندر ایک کمپٹنسی بیسڈ اور اسکل بیسڈ ایجوکیشن کو انکارپوریٹ کروا سکتے ہیں. کیا یہ ان سب چیزوں سے ہم لوگ واقف ہی ہیں کہ ہمارا انمپلائمنٹ لیول کا ریٹ کتنا انکریزنگ ریٹ پہ جا رہا ہے اور کشمیر میں تو ہر fourth is unemployed. To some extent, we have to make sure that there has to be skill incorporated in our lessons. ہمارے لیسنس میں کتنا ایک اسکل انکارپوریٹ ہوگا، ہمارے لیسنس کی ڈیلیوری میں وہ کتنا انکارپوریٹ ہوگا، ہمارا ہر اپروچ کتنا تھیمیٹک ہوگا، ہم کس طریقے سے ٹیچرس کو کولابریٹ کر کے ایک بیسٹ اسٹیک ہولڈر بنا سکتے ہیں. تو یہ اس کا ایک ڈیلیبریشن تھا جو ہم لوگوں نے 1 day کا پروگرام رکھا تھا. اینڈ آل اکراس دا انڈیا پیپل ویئر ہیئر. آئی ایم ویری تھینکفل ٹو دیم. اینڈ موسٹ پرابلی میرے بچے جو آج یہاں پہ میرے سینئر کلاس کے بچے تھے، میرے گریڈ 2 کے بچے تھے اور جن کو ایک انکلپولیشن بہت ضرورت تھی اور ان کے اندر وہ لیڈرشپ لانا، کیونکہ یہی ہمارا فیوچر ہے اور یہی ہمارا مستقبل بھی ہے. اور اگر ان کو ابھی ہم ان سب چیزوں سے واقف نہیں کروائیں گے تو یہ کبھی ہو نہیں پائے گا. ڈاکٹر انجینئر تو یہ بنیں گے انشاءاللہ. اور ایٹ دا سیم ٹائم کون اور سے کتنے اور آپشنس ہیں جو ان کے لیے کھلے ہیں، کون سے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں، کیا کچھ نہیں یہ کر سکتے. تو 1 child 1 choice پروگرام ہی ایک مین بیانڈ اکیڈمکس ہے. تھینک یو.
Tell me, for God's sake, how many schools, how many big schools I talk of, not say about the smaller ones, the modest school ones, the bigger schools, where you recruit a faculty and then send them for a pre-induction training. And directly send that person to the classroom, and the person is, now the students are at the mercy of that teacher, whether he or she knows the tricks of the trade. Greetings, ladies and gentlemen. I am Khan Ismat and I study in Birla Open Minds International School, as our school had organized the first National School Conference Leadership. It gives me immense pleasure to speak about it. And the first question that arises in our mind is that what we learned here. We learned about the optional careers, different types of career options that we have in our life. We talked about the extra curriculum that we need to follow. We talked about the different education policy that the CBSE and the other boards are implementing in our school. So in order to get all of it, we need to implement and integrate the different school policies and the different educational policies in order to brush up the upcoming minds in the nation, as the students are the pillars of the nation. And we talked, and there were principals from all over India who talked about the different educational policy that need to be implemented in the school. And this is how we learned we need to share this experience even when we are playing with our siblings, even when it comes that we are talking to someone. This all needs to be implemented. And I thank our principal, Dr. Mehnaz, for giving us the opportunity to learn the different types of experiences and everything. Thank you so much. Good evening to everyone. This is Mir Naveed from Birla Open Minds International School. So today, as a student, I felt very proud because for the first time in Kashmir, Birla Open Minds was hosting the conference, that namely the Bright Talks GSLC conference. In this conference, I got to know a lot from the outsiders, especially from the people from other states of India. And there were more than 135 guests in this conference. And in this conference, we discussed about the skill development. If a student does not need to become a doctor, but he can become something else out of the box, he can think out of the box, he can create the jobs for other people. This was all about that conference in which the skills were developed and how to develop the skills. Thank you.